So as you can see in this diagram कि subclavian artery जो है it is continuous as axillary artery ठीक है at the lateral border of the first rib. This is the first rib. Subclavian artery extends from the arch of aorta till the lateral border of the first rib. From the lateral border of the first rib, the subclavian artery is continuous as axillary artery. Then the axillary artery is crossed interiorly by the pectoralis minor muscle. ठीक है, this pectoralis minor muscle will divide the axillary artery into three parts. First part superior, second part below, and third part next to the pectoralis minor muscle. ठीक है, then the axillary artery जो है it gives branches such as the posterior circumflex humeral artery and the anterior circumflex humeral artery ठीक है, which will anastomose around the neck of the humerus. Then this axillary artery जो है it continues until the lateral border of the teres major muscle. This is teres major muscle. teres major muscle के lateral border तक extend करेगी. Then the axillary artery is continuous as the brachial artery, and the brachial artery begins from the upper border या lateral border of the teres major muscle से start होगी brachial artery और extend करेगी till the cubital fossa. And what are the branches of brachial artery? अब हम इसको discuss करेंगे. So the brachial artery starts from the lateral border of the teres major muscle. It is a continuation of the axillary artery, and it extends until the cubital fossa. And in the cubital fossa, it gives off finally two terminal branches, radial artery and ulnar artery. What are the branches of brachial artery? Brachial artery gives off profunda brachial artery. Profunda brachial artery इसकी main arterial branch होती है, इसको हम main या deep brachial artery भी कहते हैं, ठीक है. और ये जो deep brachial artery या profunda brachial artery होती है along with the radial nerve जो है ये radial groove में present होता है. radial groove कहाँ present होता है? radial groove जो होता है वो mid shaft of the humerus में present होता है. इसलिए जब भी हमारे पास fracture of the mid shaft of the humerus होगा तो हमारी radial nerve और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जो होंगे उनका डैमेज होगा. ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यू कि व्हेनेवर देयर इज फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, इंजरी टू द रेडियल नर्व एंड द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी. Next branch of the brachial artery is the superior ulnar collateral artery, and another branch is inferior ulnar collateral artery. And then the brachial artery it continues as terminal branches radial artery जो कि आपके lateral side of the arm के ऊपर होती है, ठीक है, thumb वाले side के ऊपर, और ulnar artery होती है जो हमारी medial side पे little finger के side पे जो है वो ulnar artery travel करती है. रेडियल आर्टरी क्या बनाती है? रेडियल आर्टरी डीप पामर आर्च बनाती है, और अल्नर आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है, और अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच होती है कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब.